हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं 5:30 और चलते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं और मिलते हैं आपको रेडी होके। बाय। हाय, सो इट्स नाउ 6:15 एंड वी आर गोइंग, वी आर रेडी। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की इलेक्ट्रॉनिक सिटी से मंदारगिरी हिल्स का टोटल डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स। अगर आप बैंगलोर के किसी अदर लोकेशन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऑल्टरनेटिव रूट भी फॉलो कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिच द बैंगलोर ट्रैफिक, नाइस रोड इज द बेटर ऑप्शन। प्लस यू विल बी एबल टू सी स्पेक्टेकुलर व्यूज। सो 6:45 पे सनराइज़ का टाइम था और अभी 7 o'clock हो रहे हैं एंड ऑलरेडी सनराइज़ हो चुका है। इट्स ब्यूटीफुल। अभी 23 किलोमीटर्स रिमेनिंग है, बट यहाँ इतना ज़्यादा फॉग है, मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। लेट्स सी। So this is the exit point from highway, which is about 2 to 3 kilometers from Mandaragiri Hills. The roads here are not so good, so you have to drive very safely and carefully. So car parking is available in this area, which is 40 rupees for four-wheeler. And as you can see, there's enough space for car parking. तो कार पार्किंग हिल के एंट्री पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स है। सो यहाँ से आप वॉक करके भी आ सकते हैं और व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। After 400 steps later, you'll be able to make it to the temple, and the entry fees is rupees 10 per person, and view from here is spectacular. So you can sit here, relax for some time, and enjoy the fresh air. So now we are heading towards another beautiful lake located near to this place. The crystal clear water and calmness of this place is at another level. So if you are in Bangalore,
You should definitely try this place. So, if you want to halt for a quick breakfast or brunch, Namaste Bengaluru could be a better option. This place offers ample amount of parking space. Thanks for watching my channel. Bye bye everyone. Stay happy. And if you like my video, do like, comment, share and subscribe. Thank you.